Hello, dear students. Welcome back to our today's class. And today we are going to start a new chapter. It's a very interesting, very fresh chapter. Chapter number 12, Study of Sound. Okay, already you have learned something about this topic in your earlier standards. Okay, but in this chapter we are going to see the things, whatever information is there in detail. So I hope all of you are with your textbook. Okay, and please mark the important notes, important points, because in this video you will get a lot of definition and some kind of fill in the blanks kind of content, okay, which is very important from your exam point of view. So I hope all of you are with your sitting with your pencil and textbook. Okay, so here one picture is there and you have to observe this picture. Okay, so what this all picture says is about, yes, think about sometime, like for 1 minute. I'm giving you 1 minute to think about this topic. Okay, so all these objects, all these instruments, whatever the sample is there, what it produce? Yes, it produces sound. Okay, and you all know that sound plays a very important role in our day-to-day life. Okay, we can't do any kind of thing without sound. Every time we require that kind of frequency, and when we hear someone, we'll able to give answer to that person. So for that, what is required? Sound is important. Okay, so in this chapter we are going to study about sound. Okay, okay, now here let's see some kind of basic things about sound and how it gets produced. Okay, so here you can see sound is a form of what? Sound is a form of energy, okay, which creates the sensation of hearing in our eyes. Okay, so it is in the form of energy which creates what? Sensation, and through that sensation we are able to hear whatever the 1% or whatever the sounds are going around us. So sound is what? It is a kind of it is a form of energy which creates what? Sensation of hearing in our eyes, in our ears. Okay, so this energy is in the form of what? This energy is in the form of waves. Here you can see some kind of waves. Okay, they are going down, then they are moving up, going down. Okay, yes, so like that, this is this is some kind of band of waves. Okay, so this energy is in the form of what? It is in the form of waves. A medium is necessary for the propagation of sound waves. Okay, so medium मतलब क्या होता है? It is like that through the air. Okay, we are able to hear some person, we are able to hear the next person. तो air क्या है? एक medium है. Okay, so beside air, any kind of medium which is like in the solid form, it is in the liquid form. Okay, so through that that is necessary for what? Propagation of sound waves. So sound waves give rise to a chain of compression, a place of higher density. Here you can see a place of higher density. It is called as what? जब density high होती है तब उसको क्या बोलते हैं? Compression. Okay, and when it is lower, then it is called as what? It is called as rarefaction. ठीक है? Okay, so when the lower density takes place at the thing, here you can see it is called as rarefaction, and the higher density is called as what? Compression. Very good. In the medium. Okay, so here the particles of the medium oscillate about their central or mean position. Okay, so here you can see oscillation. Oscillation हो रहा है मतलब waves are getting produced. Yes, so the particle of medium, what they do? They oscillate about their central part and their mean position. Okay, and they are in a direction which is parallel to the propagation of the wave. Okay, here you can see they are moving parallel to each other. Yes, सबका direction same ही है. When it is at the higher place, then it is called as compression. When lower place, it is called as rarefaction. So such waves are called as which waves? Longitudinal waves. So these waves are called as which waves? Longitudinal. And the second type
in the wave created by dropping a stone in a still water. तो आप सबने देखा है और सबने ऐसा किया भी होगा, लाइक ऐसा कुछ काइंड ऑफ रिवर इज़ देयर, काइंड ऑफ बिग तालाब जैसे रहता है, नाला रहता है, तो हम क्या करते हैं, पत्थर लेके उसमें ऐसे मार देते हैं. सो आफ्टर दैट व्हाट you observe some kind of waves that creates around that stone. वो स्टोन तो पता नहीं किधर जाता है, डीप इनसाइड द वाटर, बट क्या होता है उसके साइड में वेव्स जो है वो प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं लाइक दिस. ओके, सो यू हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ वेव्स. येस, सो the particles of water oscillates up and down. Okay, up and down, the particles of water, what they do, they oscillate. These oscillations are perpendicular to the direction of the wave and such waves are called as transverse waves. Okay, तो जो parallel है वो क्या होते हैं, longitudinal wave, और here you can see the perpendicular, that is called as transverse waves. ठीक है, okay. Now these are the two types of waves which we have studied. Already आपने ये study किया है in your lower standard, but this is a quick revision. Now here you can see a sound wave can be shown in the form of a graph. Okay, so it can be shown in the form of graph also. Yes, at any moment during the propagation of a sound wave, we would find alternate bands of compression and rarefaction of the medium. Bands of greater density, greater and lesser density. Okay, तो जैसे कि पहले आपको यही डायग्राम देखना है, इसमें क्या है दैट यू हैव टू ऑब्जर्व. तो जैसे कि क्या बोला, कॉम्प्रेशन हो रहा है, रेयरफैक्शन हो रहा है. सी मतलब कॉम्प्रेशन. कॉम्प्रेशन के टाइम पे चेंज इन डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी में क्या चेंज होता है. हियर यू कैन सी, यहाँ पे जो आपको दिखाई देता है वो ब्राइट कलर का ब्लैक कलर दिखाई देता है. ओके, और यहाँ पे थोड़ा लाइट है, यहाँ पे ब्राइट कलर है, यहाँ पे थोड़ा लाइट कलर है. सो फ्रॉम दिस व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट डेंसिटी जो है वो कॉम्प्रेशन जब होता है तब हाई रहती है, फिर रेयरफैक्शन होता है तब थोड़ी लो रहती है, फिर कॉम्प्रेशन होता है तब हाई रहती है, फिर रेयरफैक्शन के टाइम इट गेट्स लोअर. ओके, येस. So a figure A shows the changes in density while B shows changes in pressure. यहाँ पे भी सेम, फर्स्ट में चेंजेस इन डेंसिटी देखा, यहाँ पे चेंजेस इन प्रेशर. प्रेशर के टाइम पे कॉम्प्रेशन में यू कैन सी अ डार्क कलर बैंड्स. ओके, ब्लैक डार्क कलर बैंड्स हैं, और रेयरफैक्शन में थोड़ा लाइट वाइट कलर का बैंड्स दिखेगा, लाइट कलर है. ओके, सो दैट मीन्स व्हाट इट इंडिकेट्स, प्रेशर भी कॉम्प्रेशन जब होता है तब क्या होता है, हाई रहता है, फिर रेयरफैक्शन के टाइम इट गेट्स लोअर, फिर हाई फिर लोअर, फिर हाई फिर लोअर, लाइक दैट. ओके, एंड द सी डायग्राम जो था इट इंडिकेट्स व्हाट, डेंसिटी ऑफ प्रेशर आर शोन इन द फिगर नंबर सी. तो डेंसिटी और प्रेशर है, डेंसिटी क्या है, हाई है, यहाँ पे यू कैन सी. ओके, एंड प्रेशर जो है वो लो है. सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट, एवरेज डेंसिटी और प्रेशर. तो कॉम्प्रेशन के टाइम पे डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है. ओके, एंड हियर इट इज़ शोन लाइक इन द रेयरफैक्शन इट इज़ लोअर, फिर हाई फिर लोअर. बेसिकली डेंसिटी और प्रेशर जो है वो कॉम्प्रेशन जब होता है तब हाई रहता है, फिर रेयरफैक्शन के टाइम पे इट गेट्स लोअर. सो दैट इज़ द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर. ओके, now here some important terms are there which will definitely ask for MCQ or some kind of one sentence, so you have to understand it. The wavelength of sound waves is indicated by the Greek letter lambda. Okay, तो wavelength जो है वो कैसे indicate होती है, lambda से. You have to remember this symbol, huh? This is very important for your higher standard also. So the wavelength of sound waves is indicated by Greek letter lambda, while its frequency is indicated by nu. Okay, ये जो है y है, उल्टा y, और ये थोड़ा v और u टाइप का होता है तो उसको nu बोलते हैं. Okay, the amplitude, here you can see the amplitude which is the maximum value of pressure or density is indicated by A.
ओके, तो मैक्सिमम प्रेशर और डेंसिटी कितना होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ए मतलब एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड। ओके, द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन ऑफ प्रेशर और डेंसिटी एट अ पॉइंट इन द मीडियम इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। ओके, तो जहाँ पे वन ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, वन ऑसिलेशन मतलब क्या, वन कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन मिक्स करके, लाइक दिस हियर यू कैन सी वन वेव इज गेटिंग क्रिएटेड, सो दैट मीन्स वन ऑसिलेशन एंड द टाइम पीरियड, उसको जितना टाइम लगता है, सो दैट इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल टी। The value of frequency determines the pitch high or low of a sound, while the value of the amplitude determines its strength or loudness. For example, सा रे गा मा, आपने जो 7 नोट्स होते हैं, ओके, 7 स्वर जो होते हैं वो सबने सुना होगा। ओके, तो उसका रेंज कैसे रहता है, सा जो रहता है सबसे लोअर रहता है, फिर रे हाई रहता है, और जो लास्ट वाला सा होता है वो सबसे हाई नोट्स पे जाके उसका पिच सबसे हाई होता है। ओके, सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द साउंड फ्रॉम सा रे गा मा प द नि सा, ठीक है। सो दैट इज़ द रेंज ऑफ साउंड। ओके, यस, नाउ वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी मतलब क्या, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पॉइंट, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, you all know this formula, velocity is equal to what, distance divided by time. So the distance covered by a point on the wave, for example the point of the highest density or the lowest density, highest density or lowest density in the unit time is called as velocity of the sound wave. Basically you have to remember this formula. ओके, जब फॉर्मूला रिमेंबर होता है तब अपने आप जो डेफिनेशन है दैट यू विल एबल टू राइट। सो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, येस। सो डिस्टेंस एट एनी पॉइंट ऑन द साउंड वेव कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू लैम्बडा। लैम्बडा मतलब क्या, वेवलेंथ, ओके, इन टाइम टी, दैट इज टी। सो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, ओके, सो डिस्टेंस मतलब क्या, वेवलेंथ, एंड वेवलेंथ का सिंबल क्या है, लैम्बडा। So V is equal to lambda divided by time taken is T. This is the original formula, but यहाँ पे some kind of substitution दिया है, that is हमने new भी देखा। new मतलब क्या होता है, 1/t, okay। For example here you can see V मतलब velocity है, lambda मतलब wavelength है। अगर lambda को हम निकालेंगे तो 1/t ही बचेगा ना, okay। So that 1/t is called as what, nu, okay। सो V इज़ इक्वल टू न्यू कौन सी जगह पे लिया हमने, 1/t की जगह पे न्यू लिया, एंड लैम्बडा तो है यहाँ पे ऑलरेडी, येस। सो द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू व्हाट, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, न्यू, ओके, एंड लैम्बडा मतलब क्या, वेवलेंथ, ओके, येस। सो हियर इन एनी मीडियम एट फिक्स्ड physical condition, the velocity of sound of different frequencies is very nearly the same, but the velocity is highest in solids, okay। यहाँ पे देखो ये सबसे highest है किसमें, solid state में, but gaseous state में सबसे lower है, okay। It increases with an increase in the temperature of the medium. So here you can see solid में क्या है, aluminium, nickel, steel, iron, brass, glass. So here you can see the velocity of sound in various mediums at 25 डिग्री सेल्सियस। तो उसका स्पीड क्या है, 5420 मीटर पर सेकेंड, किसका है, एल्यूमिनियम। तो इतना ज़्यादा स्पीड है, सो यू कैन इमेजिन हाउ फास्ट वी कैन हियर द वॉइस और द साउंड। फिर लिक्विड में यू कैन सी वाटर, प्योर वाटर, इथेनॉल, मिथेनॉल है, ओके, इसमें थोड़ा मीडियम रहेगा, यू कैन सी। एंड गैस में हाइड्रोजन, हीलियम, एयर सबसे लोअर रहता है, दैट इज़ एयर में कितना है, 346, ओके। सो दिस इज़ द स्पीड विच इज़ गिवन ओवर हियर ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेट्स। द इटालियन फिजिसिस्ट बोडेली एंड विवियानी इन द 1660s first calculated the speed of sound. So this is about the scientist, which is not necessary to read. If you want, you can read. Okay. So the velocity of sound in a gaseous medium. The velocity of sound in the gaseous medium depends on the physical condition.
फिजिकल कंडीशन मतलब क्या होते हैं? टेम्परेचर, हियर यू कैन से टेम्परेचर, डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट, ओके, एंड मॉलिक्यूलर वेट। ओके, सो टेम्परेचर टी से डिनोट करते हैं, तो ये क्या है? द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। ओके, सो टेम्परेचर कैसे डिनोट करते हैं? टी से। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। दैट मीन्स स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पे टी की जगह पे 2 लिया तो 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4। दैट मीन्स इंक्रीजिंग द टेम्परेचर 4 टाइम्स डबल्स द वेलोसिटी। यस, हाँ। नाउ डेंसिटी ये पी से डिनोट करते हैं, बट यहाँ पे पी का सिंबल कैसा है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। So the velocity of sound is inversely proportional to the square root of density. It is inversely proportional, 1 upon square root of density. Okay, thus increasing the density 4 times reduces the velocity to half its volume. हाफ क्यों होगा और यहाँ पे क्यों 4 टाइम्स होगा? यहाँ पे इन्वर्सली है ना, तो हाफ हो जाएगा वेलोसिटी और यहाँ पे क्या होगा? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। ओके, नाउ मॉलिक्यूलर वेट m, the velocity of sound is inversely proportional to the square root of molecular weight of gas. तो दो जगह पे क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बट टेम्परेचर में ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, yes. Now here you can see the molecular weight of oxygen gas is 32 while that of hydrogen gas is 2. Prove that under the same conditions the velocity of sound in hydrogen is 4 times than in the oxygen. तो क्या रहता है? फॉर अ फिक्स टेम्परेचर जो रहता है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ऑफ द गैस। ओके, नाउ हियर सम इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी टॉपिक दैट इज ऑडिबल, इंफ्रा एंड अल्ट्रासाउंड। ऑडिबल साउंड मतलब क्या? जो हम सुनते हैं, जो हमको ऑडिबल है, ह्यूमंस को जो ऑडिबल है उसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड। ओके, सो द लिमिट ऑफ हियरिंग ऑफ द ह्यूमन ईयर आर 20 हर्ट्ज एट जेड मतलब हर्ट्ज, ओके, टू 20,000 हर्ट्ज। ओके, तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। सो दैट इज़ द ह्यूमन ईयर कैन हियर साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज इन दिस काइंड ऑफ रेंज. So these sounds are called as what? Audible sound. Okay, yes. Now our ear cannot hear the sounds of frequencies lower than 20 hertz and greater than higher than 20,000 hertz. Okay, so 20,000 hertz मतलब क्या रहता है? 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो हमारा जो ईयर है वो लेसर देन 20 हर्ट्ज एंड ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज नहीं सुन सकता। ठीक है, okay, so the sound with frequency smaller than 20 hertz it's called as infrasound. सबसे lower sound जो रहता है infrasound, that is smaller than 20 hertz. Okay, yes. The sound produced by a pendulum. पेंडुलम सबने देखा है? पेंडुलम मतलब जैसे कि वॉच में रहता है, वो ऑसिलेट होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ओके, okay, so that sound and the sound generated by the vibrations of earth crust just before the earthquake. तो जब earthquake होने वाला होता है तब earth crust में क्या होता है? कुछ vibration होता है, वो इतना minute रहता है। ओके, सो इतना थीन रहता है जो हम सुन नहीं सकते। सो these are the examples of infrasound. Okay, and the sound waves with frequency greater than 20 kilohertz are called as ultrasound. सबसे highest ultrasound रहता है। Okay, now the dog, mouse, bat, dolphin etc. have a special ability to hear infrasound. Okay, तो माउस भी रहता है, डॉग को भी रहता है। आपने देखा होगा कभी कभी बहुत थीन जो साउंड होता है वो सुनते हैं। कैट का भी ऐसे होता है। Thus they can sense some noise which are inaudible to us. जो हमको inaudible है, जो हम नहीं सुन सकते, वो लोग बहुत अच्छे से एकदम माइन्यूटली सुनते हैं। Children under 5 years age and some creatures and insects can hear waves with the frequency up to 25 kilohertz. Bats, mice, then dolphins, etc. can also produce ultrasound. Okay, they can also produce ultrasound, higher sound. Okay,
So this is about your today's video, what we have learned. After that some uses दिए हैं अल्ट्रासोनिक साउंड के, that you have to that you just read it, okay, टेक्स्ट बुक में. आफ्टर दिस टॉपिक, ओके, ये टॉपिक के बाद क्या दिया है, यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, जस्ट रीड दैट, ओके. So today we have seen some basics of sound. Your this chapter audible, infra and ultrasound we have seen, okay. Then we have seen the velocity of sound in different in gaseous medium, and it depends upon what, yes, okay. Then velocity of sound we have seen in detail, okay. So this is about your today's class. Go through the video, complete your assignment, and read the content. Thank you.